गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू SRS IAS एंड लॉ अकेडमी। आज की जो हमारी क्लास होगी वो मेंस आंसर राइटिंग की क्लास होगी, ठीक है। तो इससे पहले हम जो है 2 क्लासेस ऑलरेडी इसकी बना चुके हैं, जिसमें हम जो है हमने जो है मेंस आंसर राइटिंग में जो प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चंस जो है वो पूछे गए हैं यूपीएससी के द्वारा ड्रेनेज से रिलेटेड, वो हमने जो है वो कवर किए, ठीक है। आज हमारी जो है नेक्स्ट क्लास होगी, इसमें हम जो है 3 क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहले मैं आपको क्वेश्चंस लिखवा दूंगा, देन बाद में उसके आंसर जो है वो आपको डिक्टेट करवा दिए जाएंगे। आप क्वेश्चन लिख के अपना टाइमर लगा के अपने आंसर जो है वो फ्रेम कर लीजिएगा, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन लिखो, व्हाट आर द एनवायरमेंटल इम्प्लीकेशंस, व्हाट आर द एनवायरमेंटल इम्प्लीकेशंस of the reclamation of water bodies, reclamation, reclamation of water bodies into urban land use, question mark, explain with examples, 2021 का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, दो ही क्वेश्चन करेंगे आज हम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, इन व्हाट वेज कैन फ्लड्स बी कन्वर्टेड इनटू सस्टेनेबल सोर्सेज ऑफ इरिगेशन and all weather inland navigation in India, ये 2017 का क्वेश्चन है। अब आप अपने टाइमर्स लगा के इसके आंसर जो है वो फ्रेम कर सकते हैं, ठीक है। मीनवाइल इसके आंसर जो है वो मैं आपको लिखवा दूंगा, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन था आपका, व्हाट आर द एनवायरमेंटल इम्प्लीकेशंस ऑफ द रिक्लेमेशन ऑफ वाटर बॉडीज इनटू अर्बन लैंड यूज, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स, ठीक है। ये 2021 में आपसे पूछा गया था। इंट्रो लिखो इसकी, लैंड रिक्लेमेशन मीन्स creating land either by removing water from muddy areas or raising the level of the land, full stop. With an increasing demand for land, comma, it can be a good solution for creating areas for building, comma, agriculture and other uses, full stop, para change. However, it is one of the most consequential, consequential fields of human induced environmental transformation and has many environmental consequences. दोबारा रिपीट कर रहा हूं, however it is one of the most consequential fields of human induced environmental transformation and has many environmental consequences such as के बाद कॉलन डालो, देन उसके बाद 4 पॉइंट्स जो है वो बनाएंगे। फर्स्ट पॉइंट, डैमेज्ड इकोलॉजी, अंडरलाइन करो इसको और कॉलन डालो, लिखो इस पे, अर्बन लैंड ट्रांसफॉर्मेशन leads to creation of
leads to creation of residential, commercial buildings around water bodies, causing degradation of water ecology and influx of nutrients. Full stop. Dal Lake and other water bodies in Srinagar are a great example of it. Full stop. Land reclamation, RECLAMATION. Land reclamation can also change the shape of seabed, seabed and wave patterns, leading to changes in the ecosystem. Full stop. Second point, frequent floods. अंडरलाइन करके कॉलन डालो, लिखो water bodies act as sponges for SPONGES, sponges for rainfall, reclamation of water bodies, has led to higher incidences of floods. Full stop. Depletion of vegetation, transformation of soil cover to concretized, CONCRETISED, concretized landscape has reduced permeability, 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 increased runoff. Full stop. The biggest example of it is Mumbai. Full stop. Next point, extinction of species. कॉलन डाल के अंडरलाइन लगाओ, लिखो लैंड रिक्लेमेशन of wetlands has increased the biochemical oxygen demand, BOD, biochemical oxygen demand, ब्रैकेट में BOD लिख लेना, which is detrimental, DETRI, which is detrimental, MENTAL, not only for aquatic species, but also for aerial fauna. FAUNA. Full stop. Last point, pollution. Water bodies have been turned into landfills in several cases. Full stop. Because of heavy pollution,
because of heavy pollution of Hussain Sagar Lake, HUSSAIN, Hussain Sagar, SAGAR, Hussain Sagar Lake, comma, many pollutants get carried into underground water bodies, full stop. Though percolation filters many pollutants, comma, open wells or bore wells receive certain pollutants causing groundwater pollution. Full stop. Next point. Sorry, conclusion लिखो. Water bodies not only support high concentrations of biodiversity, but also offer a wide range of important resources and ecosystem services like food, water, fiber, groundwater recharge, water purification, flood moderation, storm protection, erosion control, carbon storage, and climate regulation. Full stop. Hence their conservation is an imperative. IMPERATIVE, imperative. Next question था आपका, in what ways floods can be converted into sustainable sources of irrigation and all weather inland navigation in India? 2017 का क्वेश्चन था ये. इंट्रो लिखो इसकी. India experiences monsoons for a period of 4 months, during which sometimes incessant, incessant rains cause floods and devastation, while for the rest of the year it remains dry for most parts, often resulting in water shortages, full stop. This excess flood water can surely be used as a valuable resource in water scarce regions for the non-monsoon months, thereby solving the
twin problems of flood and water scarcity. Of flood and water scarcity. Full stop, para change karo. The following methods can be used. The following methods can be used to achieve this objective. कॉलन डालो और 4 पॉइंट्स बनेंगे आपके इसके. पहला पॉइंट, लिंक, रिवर लिंकिंग. रिवर लिंकिंग लिखो, इसमें अंडरलाइन कर लो इसको, रिवर लिंकिंग को लिखो. द गवर्नमेंट हैज बीन एम्बिशियस. द गवर्नमेंट हैज बीन एम्बिशियस with this project of diverting excess water from overflowing rivers to rivers in the non-perennial regions. Overflowing rivers to rivers in non-perennial regions, comma, in order to solve the problems of the floods and water shortage. In order to solve the problems of flood and water shortage. Full stop. These river linking channels could also be useful as all weather inland navigation waterways, comma, thereby helping in creating a cheaper and pollution free mode of transport. Full stop. Second point, rainwater harvesting. इसमें लिखो, excess water can be captured and stored in wells, comma, tanks, etc. During rains, as was practiced in many parts of India during medieval period. Full stop. Next point, multi-purpose projects or dams. इसमें लिखो, dams can be erected in flood areas to capture excess water which can then be released slowly over the year as per irrigation requirements. Full stop. Last point, inundation, 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 canals and weirs, WEIRS, canals and weirs. इसमें लिखो, flood water can also be managed by making diversions through inundation canals, comma, small irrigation structures and with weirs, 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 that take away excess water to the agricultural fields.
फुल स्टॉप। कंक्लूजन लिखो, द मेथड स्टेटेड अबव, द मेथड्स स्टेटेड अबव, द मेथड्स स्टेटेड अबव, comma, can go a long way in solving various water woes, WOES, woes of India if implemented expeditiously, EXPEDITIOUSLY and on a large scale, ठीक है। तो इसी के साथ आपके क्वेश्चंस जो हैं, जो ड्रेनेज के रिगार्डिंग आपसे पूछे गए थे यूपीएससी के प्रीवियस ईयर्स मेंस में, वो जो है वो फिनिश हो जाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो है वो हम एग्रीकल्चर के क्वेश्चंस की क्लासेस जो है वो आपके लिए लेके आएंगे, ठीक है। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो यहीं तक थी। थैंक यू सो मच।